इसमें उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं रंजन कुमार हूं, इस इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र पर उप निदेशक के पद पे कार्यरत हूं। आप सभी जानते हैं कि 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। आखिर हम 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं 28 फरवरी को कि 28 फरवरी 1928 को प्रोफेसर सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट की खोज तो उन्होंने बहुत पहले से शुरू कर दी थी, एक्सपेरिमेंटेशन तो उनका पहले से जारी था, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया था रमन इफेक्ट को, जिसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया। यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को और उसके बाद हमारे प्रोफेसर सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज 1930 में दिया गया। इसके उपलक्ष्य में जो है हम बल्कि भारत सरकार ने 1986 में यह निर्णय लिया कि हम हर साल 28 फरवरी को, वह दिन जिस दिन सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट की खोज की घोषणा की थी, उसको हम नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। सीवी रमन जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में बहुत ही कम उम्र में, 16 साल की उम्र में उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया था। 18-19 साल में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था। 16 में उन्होंने बीए किया और 18 साल की उम्र में उन्होंने जो है एमए किया। अब सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि उन्होंने बीए किया और एमए किया और खोज उन्होंने की फिजिक्स में। तो यह एक बहुआयामी व्यक्तित्व के आदमी थी और पहला उनका जो रिसर्च पेपर जो फिलॉसफी में पब्लिश हुआ था। बाद में उन्होंने साइंस की ओर जो है, क्योंकि साइंस में इंटरेस्ट उनको बहुत पहले से था, तो साइड बाय साइड वो अपने इस हॉबी को जो है वो अब जारी रखते थे, एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते थे। कुछ कारणवश पारिवारिक परिस्थिति के वश आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी, इसलिए वो बाहर पढ़ने नहीं गए। फिर 1907 में उन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करी और कलकत्ता में जो है वो रहना शुरू किए जो है। लेकिन सिविल सर्विस का दायित्व निभाते हुए भी उन्होंने अपना साइंस का एक्सपेरिमेंटेशन छोड़ा नहीं। वहां एक इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस करके एक संस्था थी, जहां वो प्रतिदिन जाकर के अपना एक्सपेरिमेंट करते रहे और इस तरह से उन्होंने कई एक रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया और बाय द टाइम 1921 तक जो है वो एक विश्व के जो है जाने माने वैज्ञानिक के रूप में स्थापित हो चुके थे। और उसी संदर्भ में उन्हें बुलाहट हुई 1921 में विदेश जाने की। और मतलब रमन इफेक्ट की खोज भी एक अपने आप में एक रोचक घटना है, जो एक नहीं होता कि हम साइंस वाले जो है प्रकृति के रहस्य को क्वेश्चन करते हैं, तभी जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 1921 में वहां गए और लौट रहे थे, तो समुद्र से लौट रहे थे, तो मेडिटेरेनियन सी में एकाएक उन्होंने देखा कि वहां का साफ समुद्र जो है बिल्कुल जो है बहुत क्लीन होता है और उन्होंने देखा कि भाई इसका रंग नीला क्यों है। तो उस समय तक जो स्थापित मान्यता थी उसके अनुसार ये था कि ये समुद्र का जो कलर है वो नीला इसलिए होता है कि आसमान का जो कलर का वो रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए उसका कलर नीला होता है। लेकिन इसको उन्होंने क्वेश्चन किया और बाद में अब आप जानते हैं कि वो फिर किस तरह से उन्होंने साबित किया जो है कि उसका कलर रिफ्लेक्शन नहीं है आसमान का, बल्कि वो जो किसी भी लिक्विड से जब सूरज की किरणें या कोई इस तरह के जो है रे पास करते हैं तो उनमें फ्रैक्शन होता है। जो भी हो, मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं। तो इस तरह से क्वेश्चन करके उन्होंने कहा कि जो एक कलर जो है वो जब भी कोई लिक्विड सूरज की किरण या कोई भी इस तरह का लाइट जब लिक्विड से पास थ्रू होता है तो एक कलर जो है क्रिएट करता है। तो इसको उन्होंने स्थापित किया और उसी के आधार पे उन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला। और ये तो एक साधारण सा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि इस छोटी सी खोज
का प्रभाव जो है न केवल जो है फिजिक्स पे हुआ, बल्कि इसका प्रभाव जो है हमारे केमिस्ट्री पे भी हुआ, और बहुत बहुत सारे जो विधाएं हैं साइंस के उस पे जो उसका प्रभाव हुआ, और ये करके जो है वो एक विश्व हस्ती के रूप में जो है अपने आप को उन्होंने स्थापित किया। और भारत के इस महान विभूति के इस उपलब्धि को ही हम जो 28 फरवरी को उन्होंने इसकी घोषणा की थी, उसको हम साइंस नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आज इस सभा में जो है, इस गोष्ठी में जो उपस्थित हैं, उसमें हमारे डॉक्टर अनिल कुमार डीमरी जो बड़े क्षेत्रीय निदेशक हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही रिनाउंड प्रोफेसर इस फील्ड के, साइंस के फील्ड के और नेचुरल साइंस के फील्ड के। वो है प्रोफेसर कुसुम अरुणाचलम, जो दून यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मैडम, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ डॉक्टर जगदम्बा हैं, हमारे असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और मैं ये देख रहा हूं कि हमारे इस कार्यक्रम में जो है कई एक इग्नू के कोऑर्डिनेटर, साथ ही मैं देख रहा हूं कि पुणे से भी जो है हमारे एक महारथी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर एनआर राजेंद्र प्रसाद। वह भी अपने आप में इस फील्ड के, खास करके इन्वायरमेंटल साइंस की एक बड़ी हस्ती हैं। तो मैं आप सभी को, साथ ही मेरे कुछ छात्र भी उसमें उपस्थित थे, सबका मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी ये जानते हैं कि इस साल जो हमारे नेशनल साइंस डे का जो थीम है वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, और उसी से रिलेटेड जो है आज का हमारा जो है जो संभाषण होगा, जो भाषण होगा प्रोफेसर कुसुम अरुणाचलम मैडम का, उसी से संबंधित है। उनके वक्तव्य का जो शीर्षक होगा वह है बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, कनेक्टिंग द डॉट्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। मैडम, और कार्यक्रम का रूपरेखा इस रूप में होगा कि आगे हमारे डॉक्टर अनिल कुमार डीमरी फॉर्मली जो है औपचारिक रूप में आप सबका स्वागत करेंगे। मैडम प्रोफेसर कुसुम अरुणाचलम स्वागत करेंगे, अन्य जो अतिथियों का स्वागत करेंगे। उसके बाद मैडम अपना जो है व्याख्यान देंगी, जिनके लिए हम मान के चल रहे हैं कि जो समय का निर्धारण है वो 40 to 45 मिनट्स का होगा, and that will be followed by a discussion and comment from our audience, and finally the vote of thanks will be delivered by Dr. Jagdamba Prasad, our assistant regional director. So this is going to be the format of today's program. So I request Dr. Deemri, Anil Kumar Deemri, our senior regional director, to kindly give formal welcome to Professor Kusum Arunachalam and other participants of the program. Dr. Anil Kumar Deemri, please. Thank you very much, Dr. Ranjan. इस कार्यक्रम में के चीफ मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता प्रोफेसर कुसुम अरुणाचलम, HOD एनवायरमेंटल एंड नेचुरल साइंसेज, दून विश्वविद्यालय देहरादून, डॉक्टर रंजन, हमारे क्षेत्रीय केंद्र के जो समन्वयक कोऑर्डिनेटर्स हैं पूरे उत्तराखंड से, डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद, हमारे सहायक क्षेत्रीय निदेशक, डॉक्टर एनआर राजेंद्र प्रसाद जो पुणे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि किसी कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम हमारे जो मुख्य अतिथि होते हैं हम उनका आप लोगों से परिचय कराते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि कौन हैं। तो जैसे डॉक्टर रंजन ने बताया और मैं उसी कड़ी में आगे बात करने जा रहा हूं कि आज के हमारे मुख्य कार्यक्रम के और जो हमारे मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर कुसुम अरुणाचलम हैं। और प्रोफेसर कुसुम अरुणाचलम बहुत लंबे समय से जो है पर्टिकुलरली जो है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इस फील्ड में काम करती आ रही हैं। और इन्होंने जो है जो नेहरू है, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी से MSc किया और वहीं से नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी शिलोंग से ही जो है इन्होंने PhD की। और PhD करने के बाद ये विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी रही और इन्होंने
soil plant microbe interactions, forest ecology, biodiversity and conservation, climate resilience and ecosystem, ट्रेडिशनल नॉलेज आदि में बहुत सारा काम किया है। आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे जो है पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें आपको यंग साइंटिस्ट अवार्ड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, उसके द्वारा आपको दिया गया है। इसके अलावा आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप भी आपने की है, और साथ ही आपने इतने लंबे समय में बहुत सारे जो है शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, और वो शोध पत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण शोध पत्र रहे हैं, और कुछ जो है पुस्तकों का भी आपने लिखा है, और उनका भी अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंस है। और इसके साथ ही साथ आप क्षेत्रीय स्तर पर उत्तराखंड में, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा तो पूरा उत्तराखंड का इलाका ही जो है बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, तो इस क्षेत्र में भी आप समय समय पर काम करती रहती हैं और सरकार को जो है अपना सुझाव देती रहती हैं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, और विशेषकर व्यक्तिगत रूप से मैडम हमसे लगभग 20-25 साल हो गए होंगे जब से हम आपको जानते हैं। आप नेरिस्ट में भी थी, वहां से जब मैं गुवाहाटी में था तब से मैडम को हम जानते हैं। तो मैडम, आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में जो है स्वागत है। और जैसे डॉक्टर रंजन ने बताया कि आज का जो हमारा व्याख्यान होगा वो बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज कनेक्टिंग द डॉट्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, और हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, इसमें आप व्याख्यान देंगे। इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम में हमारे क्षेत्रीय केंद्र से जितने भी जो समन्वयक हैं वो सारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका भी जो है इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और विश्वास है कि आप इस कार्यक्रम को और मैडम का जो व्याख्यान है, जो विषय आज जो चर्चा है, उसको जो है आप एंजॉय करेंगे। और साथ ही मैं अपने साथी डॉक्टर रंजन, डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद, डॉक्टर NR प्रसाद तथा क्षेत्रीय केंद्र के जितने भी हमारे सहयोगी हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनको का भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारे विद्यार्थी, जो कि हमारे पास बहुत सारे एनवायरमेंटल साइंस के विद्यार्थी और अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थी भी हैं, ये सारे विद्यार्थी भी जो है हमसे आज जुड़े हुए हैं, तो मैं इन सबका भी स्वागत करता हूं। विषय पर व्याख्यान के लिए हमारे पास आज एक्सपर्ट्स हैं, तो उनके बीच में अधिक समय तक बात करना या उनके टाइम को जो है कर्टेल करना, शॉर्टन करना अच्छा नहीं होगा। तो मैं अब क्षेत्रीय केंद्र देहरादून की ओर से आज की जो वक्ता है डॉक्टर प्रोफेसर कुसुम अरुणाचलम, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने जो है आज के व्याख्यान देकर हम सबको अनुग्रहित करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर डिमरी। मेरी आवाज आ रही है? मैडम, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मैडम आपसे अनुरोध है, अगर संभव हो तो आप, लगता है कि आपके ये कैमरे के ऊपर कहीं ना कहीं से लाइट आ रही है बहुत तेज। हाँ, कैमरे के ऊपर तो पीछे की लाइट, जो कैमरे पे जो लाइट आ रही है उसको जरा कम करें, क्योंकि आपका, हाँ थोड़ा सा और, हाँ आगे अगर लाइट हो। अब बेटर, हाँ बेटर अब दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, अब बेटर है जो है। थैंक यू सो मच। तो आप सभी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और डॉक्टर डिमरी, डॉक्टर रंजन कुमार जी, डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद जी और जितने भी कोऑर्डिनेटर्स इससे जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे आज के इस महत्वपूर्ण, जो आज हमारा दिवस है, साइंस डे, जिसको हम मनाते हैं रमन इफेक्ट के नाम से, जिसकी खोज हमारे ग्रेट CV रमन जी द्वारा की गई थी 1928 के, उस उपलक्ष्य में जो ये अपनी बातें को शेयर करने का मुझे मौका दिया है,
उस सब के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और जैसा डॉक्टर डिमरी ने कहा कि मेरी जो पढ़ाई थी, वैसे तो मैं उत्तराखंड की हूँ और मेरे मतलब तमिलनाडु से मेरे हस्बैंड आते हैं तो नाम में कुसुम अरुणाचलम है, लेकिन बेसिकली मैं टिहरी गढ़वाल से ही हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई शिलोंग, गुवाहाटी वगैरह में हुई। उसके बाद मुझे कुछ 10 वर्ष नॉर्थ ईस्ट में भी काम करने का मौका मिला था, जहाँ मैंने अरुणाचल में नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री में मैंने 10 साल के लिए कार्य किया था। और उसके बाद मैं 2007 में दून विश्वविद्यालय में 2009 से मैं दून विश्वविद्यालय में हूँ। तो दून विश्वविद्यालय जैसा आप सभी जानते हैं, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और इसका जो स्थापना 2005 में हुई थी और उसके बाद 2009 से यहाँ पे जितने भी शैक्षणिक कार्य हैं वो 2009 से शुरू हुए थे। और स्कूल ऑफ इन्वायरमेंट नेचुरल रिसोर्सेज जिसको मैं हेड कर रही हूँ, वो सबसे पहला जो स्कूल था उसकी यहाँ पे स्थापना 2009 में हुई थी। और अब यहाँ पे कम से कम 9 हमारे डिफरेंट स्कूल्स हैं, जैसे कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट है, लैंग्वेजेस है, फॉरेन लैंग्वेजेस है, डिज़ाइन है, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस। तो करीब 9 और संकाय यहाँ पे खुल चुके हैं स्कूल ऑफ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के अलावा। तो मेरा जो शोध रहा है, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे हिमालय पे काम करने का काफ़ी मौका मिला है। वैसे मैं हिमालय में पैदा हुई और उसके बाद जब मेरा कार्य क्षेत्र भी, जब मैं नॉर्थ ईस्ट में चली गई थी तो वहाँ पे ही मेरी पढ़ाई हुई। और जो मेरा शोध कार्य भी निहू में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी शिलोंग में हुआ था। और उसके बाद फिर वहाँ ईस्टर्न हिमालय जिसे हम कहते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी का एक हॉटस्पॉट है, और फिर वहाँ 10-12 साल रिसर्च करने के बाद, शोध और शैक्षणिक कार्य करने के बाद फिर मैं यहाँ उत्तराखंड में आ गई थी। और फिर उसके बाद पिछले 10-12 साल से यहाँ पर भी मैं कुछ शोध और अध्ययन का कार्य कर रही हूँ। तो ये एक मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोनों ही जो हिमालय के क्षेत्र हैं, चाहे वो आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो या पश्चिमी हिमालय है, दोनों में उनको बहुत ही करीब से देखने का मौका मिला। और अपना कुछ योगदान मैं उसमें अगर कर सकूं तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। तो जैसे आज का जो टॉपिक है, तो मैंने एक स्लाइड कुछ प्रेजेंटेशन बनाया, सो मैं आपके साथ उसको शेयर करना चाहूंगी। So just give me a second, I'll try to share the screen. आपको मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है डॉक्टर डिमरी, डॉक्टर रंजन? दिखाई दे रही है जी। अच्छा, तो फिर जो टॉपिक what the topic which I am going to discuss today is biodiversity and climate change, connecting the dots for a sustainable future. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो आजकल बहुत ही चर्चा का विषय है, और उसमें जो हमारे सीवी रमन थे, ही वॉज ऑल्सो ए नेचर लवर। जो हमने अभी सुना डॉक्टर रंजन से कि किस तरह से रमन इफेक्ट की जो डिस्कवरी हुई थी या खोज हुई थी, तो वो जब समुद्र में जा रहे थे और उन्हें स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो आसमान नीला कैसे होता है, उस पर पानी, समुद्र के पानी से उसका क्या कनेक्शन है, उस पर जब उन्होंने क्वेश्चन किया, तो उन्होंने फिर जब उस पर रिसर्च किया और उस तरह से उन्होंने एक बहुत ही बड़ी खोज हमारे सामने प्रस्तुत की थी। तो जो नेचर लवर थे, उनका ये कहना था कि अगर हम प्रकृति से कोई भी सवाल पूछें तो प्रकृति हमें उसका बहुत जवाब, कुछ ना कुछ जवाब हमें देती है, और जो प्रकृति में रहस्य छुपे हुए हैं उससे मनुष्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर बाद में जब अपने कुछ जो उनका बाद का जो समय था, तो उन्होंने उस समय फ्लावर्स, जो फूलों के कलर के बारे में भी कुछ खोज की थी, उसमें भी उन्होंने अध्ययन किया, रिसर्च की कि किस तरह से जो फूलों के कलर होते हैं और वो कैसे, मतलब उनका क्या आपस में क्या रिलेशनशिप है और क्या उनके बीच में कनेक्शंस है। तो उस पर भी उनको कुछ इंटरेस्ट जगा था अपना, जो उनके लेटर ऑन ईयर्स थे। तो उन्होंने उसमें कोशिश की कि किस तरह से जो फ्लावर के कलर्स होते हैं उनका
रोल होता है अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स, जो पॉलिनेटर्स आज के जैव विविधता में सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी हैं, जो हम जानते हैं कि अगर किस तरह से पॉलिनेटर्स जो हम आजकल बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसमें जो इंसेक्ट्स हैं, बीज हैं, उनका कितना महत्वपूर्ण रोल है हमारे इकोसिस्टम को एक तरह से इंटैक्ट रखने में। तो उस तरह के क्वेश्चन भी उनके मन में उठे थे जब वो अपने शोध के अंतिम टाइम पे थे। तो बायोडाइवर्सिटी के साथ भी, नेचर के साथ भी डॉक्टर सीवी रमन का काफ़ी क्लोज कनेक्शन रहा है और वो उनको हमेशा फैसिनेट किया था कि बायोडाइवर्सिटी, फूल और जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं तो किस तरह से आपस में एक तरह का समन्वय या रिलेशनशिप या जो हम इकोसिस्टम की पूरी परिभाषा को भी उन्होंने जानने की कोशिश की थी। तो उसी को हम आज जानना चाहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है और इन दोनों के बीच में किस तरह का कनेक्शन है और क्या कैसे ये हमें हमारे मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं या मनुष्य के द्वारा हमने बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज दोनों को ही प्रभावित किया है। तो इनके जो कनेक्टिंग हम कोशिश करेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है और किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है और क्या क्या इनमें संभावनाएं हैं आने वाले समय में अगर हम इनको हल करना चाहें, जो भी हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है अभी। तो सिंपल शब्दों में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को अगर हम डिस्क्राइब करें तो जो उसकी साइंटिफिक इसकी जो डेफिनेशन है वो कहती है कि इट इज़ अ नंबर एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ प्लांट ही नहीं, उसमें एनिमल्स, माइक्रोब्स जो हम जिनको देख भी नहीं पाते हैं, उन सभी का जो समन्वय है वो बायोडाइवर्सिटी को बनाता है। तो सिर्फ पौधों की बात बायोडाइवर्सिटी में नहीं की जाती, जानवरों की बात नहीं की जाती, बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम सूक्ष्म जीवाणु जो हम आंखों से नहीं देख सकते और उसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, वो भी बायोडाइवर्सिटी का ही पार्ट है। तो इसी के अलावा सिर्फ बायोडाइवर्सिटी ये स्पीशीज नहीं है, हम बायोडाइवर्सिटी को अगर और देखें तो बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल में देख सकते हैं और वो 3 लेवल की जो बायोडाइवर्सिटी है, सबसे पहले हम बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मीन्स जो कि आपका जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें किस तरह की विभिन्नताएं एक जगह में पाई जाती हैं या किसी देश में किस तरह की इकोसिस्टम है, उसके हिसाब से वहाँ की डाइवर्सिटी डिफाइन होती है। फिर उस इकोसिस्टम में कौन कौन सी प्रजातियां रहती हैं, कौन कौन सी स्पीशीज वहाँ पे रहती हैं, उसको हम स्पीशीज डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और फिर उस स्पीशीज के अंदर किस तरह का उनका जेनेटिक मटेरियल है, जो जीन्स है, क्योंकि ये जीन्स या डीएनए जिसको हम कहते हैं, वह भी अपने आप में एक तरह की विविधता हमें देता है। जैसे अगर हम ह्यूमन को देखें, अगर हम जो मनुष्य है उसकी वो जो स्पीशीज है होमो सैपियंस, लेकिन जो मनुष्य है वो भी आपस में किस तरह से एक दूसरे से भिन्न है और ये जो भिन्नता मनुष्यों में आती है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से आती है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो हम 3 लेवल में पढ़ाई करते हैं इसकी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। पर बायोडाइवर्सिटी की क्या जरूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों हम इतना बायोडाइवर्सिटी के बारे में आज बात कर रहे हैं और क्या इसकी हम इसको जो हम चाहते हैं कि इसका संरक्षण हो, उसकी क्या जरूरत आन पड़ी है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है, द इंटायर हमारा जो एग्जिस्टेंस है ह्यूमन बीइंग का, वो बायोडाइवर्सिटी के ही इर्द गिर्द उस पर ही निर्भर करता है। तो बायोडाइवर्सिटी से ना केवल हमें गुड्स, जिसको हम डायरेक्ट जो हम बोलेंगे कि हम जो फूड है जिसको हम खाते हैं या मेडिसिन है या वुड है, लकड़ी है, ये सब हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। लेकिन इसके अलावा जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो हम मतलब आंखों से नहीं दे सकते हैं, तो वो भी हमें बायोडाइवर्सिटी से ही मिलता है। चाहे आप उसको बोलें कि हमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे हो रही है, कि किस तरह से जो न्यूट्रिएंट हैं वो आपके लिविंग सिस्टम से फिर बाद में सॉइल से और सॉइल से फिर डिफरेंट साइकिल, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन साइकिल की तरह फिर से पूरा जो इनका चक्र चलता है वो भी बायोडाइवर्सिटी के द्वारा ही होता है। उसी के अलावा फिर अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी से हमें कई तरह की जो अदर इकोसिस्टम सर्विस है, एयर प्यूरिफिकेशन, अगर बायोडाइवर्सिटी कहीं ना हो तो वहाँ की जो हवा होती है या वातावरण होता है वो कितना दूषित हो सकता है। अगर बायोडाइवर्सिटी या फॉरेस्ट ना हो तो वहाँ पानी की किस तरह से किल्लत हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो है जिसको हम इकोसिस्टम सर्विस के नाम से जानते हैं, वो भी हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती है। तो biodiversity is not about just the wealth of nature, but it is also about the health of nature. तो ये हम अगर जानना चाहें कि सिर्फ बायोडाइवर्सिटी, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक वेल्थ के बारे में ही नहीं है, बट जो हेल्थ है, पूरा जो पृथ्वी का जो तंत्र है उसकी जो अगर हम हेल्थ या उसकी पूरे सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो सब भी बायोडाइवर्सिटी पे ही डिपेंडेंट होता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी महत्वता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी जो हमारे पूरे
मनुष्य के पूरे जीवन चक्र को प्रभावित करता है, उसको संरक्षण की कितनी अधिक आवश्यकता भी है। अगर ग्लोबल बायोडायवर्सिटी की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी तक हमारे पास जो है सिर्फ 1.7 मिलियन स्पीशीज जो है उसको ही हमने आइडेंटिफाई कर पाया है, और इस तरह के एस्टिमेट है कि पूरे पृथ्वी में कम से कम 8 से 10 मिलियन स्पीशीज हो सकती हैं। तो अभी 8 से 10 मिलियन में से केवल हम 1.7 मिलियन स्पीशीज को ही हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर पाए हैं। तो ये एक बताता है कि किस तरह से जो बायोडायवर्सिटी का ह्रास हो रहा है, जो हम इसको लूज कर रहे हैं, तो कितनी संभावना है कि कितनी ऐसी स्पीशीज हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है, लेकिन उनका जो दोहन मनुष्य के द्वारा हो रहा है उस तरह से वो लुप्तता की ओर चल रही है। तो इस तरह से ये एक एस्टिमेट दिया गया है कि जो आप इसमें 2 फिगर देख सकते हैं, एक आपका जो लेफ्ट में है वो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ स्पीशीज, जो ऑरेंज से दिखाया गया है वो है कि एस्टिमेट नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर येट टू बी डिस्क्राइब्ड, और जो ब्लू से दिखाया गया है वो है ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड स्पीशीज। तो अगर हम यहाँ भी देखें तो जो डिस्क्राइब्ड स्पीशीज है उनका प्रोपोर्शन बहुत ही कम है, चाहे आप कोई भी ग्रुप में देख लो, वायरस, प्रोटोजोआ, जितने भी ग्रुप में। तो ज्यादातर आप इफ यू सी द इंसेक्ट में सबसे ज्यादा डिस्क्राइब्ड स्पीशीज दिखाई गई है, पर उसमें भी जो अनडिस्क्राइब्ड प्रोपोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो ये बताता है कि जो बायोडायवर्सिटी है उसमें से अभी भी कितनी संभावनाएं हैं मनुष्य को कि हम उसके बारे में जानें, और अगर हम उनको पहले ही खो दे रहे हैं तो उससे हमारा जो आगे आके फायदा हो सकता है कि किस तरह की मेडिसिन हमें उनसे मिल सकती हैं, या और कई प्रकार के जो हमारे काम में आने वाले चीजें हैं वो भी हमें बायोडायवर्सिटी से मिलती हैं। तो उसका जो हम उसको लूज कर रहे हैं तो एक तरह से कितना बड़ा लॉस हमारे लिए फ्यूचर में हो रहा है। ये अगर फिगर देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से समरी ऑफ मेजर इन्वायरमेंटल चेंज कैटेगरीज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज चेंज रिलेटिव टू बेसलाइन गिवन इन द टेक्स्ट। तो किस तरह से आप देखेंगे कि अर्थ जो रेड से जो इस बार में दिखाया गया है कि वो कितना हमारा जो एरिया है वो डैमेज हो चुका है। अगर आप अर्थ सरफेस को देखें तो उसमें जो रेड पोर्शन है वो काफी बड़ा है, तो हमने अर्थ सरफेस का बहुत ज्यादा प्रपोर्शन हमारा डैमेज हो गया है। जो ब्लू वाला पोर्शन है वो अनडैमेज पोर्शन है। ओशंस को भी हम देखें तो ओशन में भी बहुत बड़ा प्रपोर्शन हमारा डैमेज हो चुका है। केल फॉरेस्ट है, सी ग्रास मेडोज हैं, तो जितने भी हमारे इकोसिस्टम हैं, most of these ecosystems are getting damaged and we have to do a lot to protect them. अगर हम भारतवर्ष की बात करें, इंडिया भी एक मेगा बायोडाइवर्स कंट्री है, और भारतवर्ष अगर हम देखें तो सिर्फ 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया होने के बावजूद 17% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स पॉपुलेशन India is having. In spite of that, we have 17% of the biodiversity hotspot in our country. So that speaks a volume about India's rich biodiversity. And out of 36 biodiversity hotspots जो पूरे दुनिया में हैं, जो हॉटस्पॉट्स हम उनको बोलते हैं जिसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक होती है, एंडेमिक स्पीशीज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और जिनमें थ्रेट 70% से ज़्यादा वो जो रीजन है वो उनमें थ्रेट है और उनको हमें उनके संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो ऐसे 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूरे दुनिया में हम वहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें से 4 हॉटस्पॉट्स हमारे देश में हैं, और हिमालय एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। उसके अलावा वी हैव इंडो बर्मा रीजन, द वेस्टर्न घाट्स एंड Sundarland. So again we can see that the protected area network जो हमारे देश का है वो करीब 5.28% है, और हमारे पास 598 के आसपास प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जिसमें नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स वगैरह हमारे देश में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष एक बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, और 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में भारतवर्ष का भी एक नाम आता है। अगर हम बात करें एंथ्रोपोसीन और द 6 mass extinction, so if you talk about that the plants, animals which we see on the planet Earth, the biodiversity which we see on the planet Earth is actually the result of evolution over the 65 million years since the last mass extinction happened. But many scientists now they are saying that the reduction in the biodiversity since the emergence of the human is on the scale of another mass extinction, and इसको एक जो नाम दिया गया है that is called Anthropocene extinction or the 6 mass extinction. So this entire era is the era of human intervention, human dominance, and that is known as Anthropocene. और इसमें जो biodiversity का loss हो रहा है that is happening on a very small time scale. So biodiversity has been
we have been losing biodiversity, but that was over a very large million of years time scale. But now the problem is that within last 65, 70 years, we have lost almost 50% of the biodiversity, and we might be heading for another mass extinction. That is what scientists are worrying about. The WWF's latest Living Planet report also estimates that we have already lost 68% of all the vertebrate wildlife population since 1970. So in last 50 years, about 70% of our vertebrate population we have lost. And more than half of the birds, animals, reptiles, amphibians, and fishes we have lost in just 50 years. And in this 50 years, the very important thing which has happened is that the human population has doubled, which has increased from 3.7 billion to over 7.9 billion. Today, we have now more than 8 billion. So this is the extent of, the loss which we are seeing in the present era, and this is why we call it as the Anthropocene or the sixth mass extinction. So if you see the relationship between the human population and extinction, this was what the E.O. Wilson, the great natural biologist from the US, he said about this, that we are in a bottleneck of overpopulation and wasteful consumption that would push half of the Earth species to extinction in this century. And E.O. Wilson, he just died last year in 2021, last year, and he was a very great sociobiologist from professor at the Harvard University, and did a lot of work on the biodiversity and its conservation. So this is the main problem of biodiversity loss and climate change is the human population. So the humans have been driving the extinction of the species faster than the species can evolve. So here in this figure, we can see that the human are tied to extinction. And if we talk about 10,000 to 40,000 years ago, the kind of mass extinction of the megafauna which took place, the giant mammoths, the giant rhino which used to live at that time, that was because of the hunting the human used to do at that time. So this was the last Pleistocene era, where the lot of human was responsible for the extinction of these large mammals at a very large scale. Yeah, this in this slide we can easily compare that the weight of the vertebrate land animals. What was it about 10,000 years ago, when the human was constituting only 1% of the total biomass on the planet Earth, and the 99% was constituted by the wild animals. So here in just today, if you see the situation today, that 32% from 1% now we have gone the entire biomass of the land animals is 32% is constituted by the humans and only 1% by the wild animals, and the 67% is livestock. The livestock is those animals which the human has domesticated for its own use, whether it is cattle, goat, sheep, hen, egg. So everything that is for its own consumption, that livestock is constituting 67%, and 32% of the biomass is constituted by human, and just 1% is wildlife. So we can see how the human has been responsible for the degradation and the mass extinction of many of these wild animals from the nature. So in this figure, again, in last 50 years, we can see that how from 1970 to 2016, the wild vertebrate animal population have declined by 2/3 in the period. The human population has doubled. So this is how the relationship between the extinction of the species and the population, human population, is depicted here. So all these problems led to the people to talk about like biodiversity. Now, after 1970, it was on the global agenda, but the people were not that much giving importance to biodiversity, although the climate change, environmental problems emerged on the international forefront. But even the biodiversity, people were not able to understand why we have to really care about the biodiversity. So later on, in 2019, there was this intergovernmental science policy platform on biodiversity and ecosystem services, which came out with a very alarming study that 1 million species are going to be threatened with extinction if we don't change our course of development, and if we don't care about the biodiversity, then in by 2100 we may be losing about 1 million species, and we have just 1.7 million species which we have discovered, and the 1 million species are threatened with the extinction. So this is the kind of alarming situation. This IPBES came out, and then there was a lot of efforts that we have to do something to prevent our biodiversity. Now, the causes of extinction, what are the drivers of extinction? That we know that since 1970, we have like just after the World War II, also the human
the lifestyle, the life expectancy increased, and the agriculture production, bioenergy, fish waste, everything, the consumption pattern increased after the World War II, and this has come at the steep price, which has been unequally distributed within the countries. So we can see the cause of extinctions has been the human hunting in the 10,000 to 50,000 years back, but recently we have a lot of other factors which have come as a major cause of or the drivers for extinction of the biodiversity. Like we have a lot of diseases, habitat loss, which is the most important factor, population, pollution, and then any kind of invasive species, that is another important threat which is causing the loss to the biodiversity. So these are some of the drivers of extinction of the biodiversity. And climate change has now emerged as one of the major driver of biodiversity also in the recent time. So here we can see that मैडम प्लीज कैमरा अभी अपना एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी ना. हाँ अच्छा, नहीं आ रहा है? हाँ, अब सेंटर में आप आ गई. ओके. So the climate change IPCC report, which was published last year on 28 February 2022, and that gave a very alarming news came out that IPCC report said code red for humanity. So that said that we have to do something. All the government and the private sectors have to take drastic action against the climate change, otherwise our future is going to be at bleak. So this was a very important report which was published last year on the Science Day itself, 28 February 2022, and that was described as the code red for the humanity. So we know that, as I told you, that the human population has been responsible for the biodiversity loss as well as the climate change. And we can see how the human has influenced and warmed the climate over the past 150 years, and we can see from 1850 onwards the changes in the temperature, and this is the observed simulated human and natural factor in this figure, which you can see here. So these are the projected scenario that if we don't if you don't do something right now, then maybe by 2100 the temperature, which is already 1 degree above the pre-industrial time, it might reach up to 3 degrees Celsius. So all the efforts are that we have to keep the temperature below 1.5 degrees Celsius, as it was discussed in the Paris Climate Accord. So that is the challenge which is lying before us, that how we have to keep the climate change under control by putting all kind of efforts in that. So the latest news which has come is that the climate change is not only having an impact in the other part of the world, but the parts which are not that much accessible, where the humans are not there. Also, many species are facing the threat of this biodiversity loss because of the climate change. And the emperor penguin, which are one of the flagship species of this Antarctica, they are at very high risk, and it has been predicted that if you don't control this temperature, if you don't keep it below the 1.5 degrees Celsius by 2100, and if the development course goes on the way it is going on, then by 2100 we might be losing this emperor penguin, the flagship species from the Antarctica. So this is so we have to keep the temperature rise within 1.5 degrees Celsius. We are already about at 1.1 degrees Celsius. So there's a lot of challenge, and this challenge has to be met within a very short period of time. So we don't have much time left. We are already in 21-23. So that we can say that if we have to just 70 or 80 years left with us, that we have to keep this under the control, and climate change is the primary driver of biodiversity loss, and the climate change depends on biodiversity as part of the solution. So these both are interlinked and cannot be separated. So climate change is causing a biodiversity loss, and as we have seen in the Antarctica, and a similar situation has also been observed in the Arctic, where the polar bear are also facing another threat due to the climate change. So this is the situation. So the magnitude of biodiversity loss, if we can see that in recent years there have been a lot of decline in the biodiversity, and this intergovernmental science policy platform on biodiversity and ecosystem services has already predicted that if we just don't mend our ways, then we may be losing about 1 million species by 2100. So this is very alarming situation, and these are different groups of the species which are facing, which are at the
facing the threat of this biodiversity loss because of the climate change. And we can see that different categories of the species, whether it is least concern, yet threatened, critically and endangered, extinct in the wild. So you can see that in cycads, there is already some species which have gone extinct in the wild. And then if you see the other groups, whether it is amphibians, dicots, conifers, corals, mammals. So a lot of critically endangered species are there, and they all are under the threat of extinction due to the climate change. So extinction, if you see from 1500, we can see how the rate of extinction from last 250 years, we can see how it has increased. And if you see the amphibians, they are the most critically, this extinction rate among the this amphibians have been the maximum, followed by the mammals, and even the birds, reptile, fishes. So these are the major groups of the animals which have shown highest rate of extinction in the last about from 1500 years. Now, how this climate change will affect the biodiversity in the coming years, we can see that if we are successful in keeping the temperature at 1.5 degrees Celsius, which has been decided in the Paris Climate Accord in 2015, then in that situation also 4% of the mammals will be losing half of their habitat under that situation also. And if we are not able to keep the temperature at 1.5 degrees Celsius, and even if we can control it up to 2 degrees Celsius, then under such situation, the 8% of the mammal will be losing half of their habitats. And if it is 3 degrees Celsius, if we are not able to mend our ways, and if we go with this current developmental path, then 41% of the mammals might be losing half of their habitat by 2100. So this is a kind of situation in that on the land, the terrestrial biodiversity, and the same situation. The situation is more alarming for the aquatic biodiversity. If you see the coral reef, which even every fraction of the temperature is counting for the coral reef. And if we have even 1.5 degrees Celsius temperature rise, in that also there will be 70 to 90% of the coral reef will be vanishing. And with the 2 degrees Celsius rise in temperature, we may be losing about 99% of the coral reefs from our planet Earth. So this is how dire the situation is with regard to the biodiversity and how it is affecting the climate change is affecting it. So biodiversity, as we see, the climate change is both are interrelated, and so therefore the biodiversity can serve as the strongest natural climate change. So because we know that if we have healthy ecosystem, if we have healthy forest, healthy grassland, then these healthy ecosystem, they serve as the sink for the carbon. So whatever carbon dioxide which is being emitted on the atmosphere is being absorbed by these ecosystems, whether it is forest. And in the ecosystem, these are the biodiversity or the plants, animals, microbes, which are actually absorbing the CO2 in their biomass, and in that way they are preventing the rise of carbon dioxide in the atmosphere. So biodiversity can be our the most important weapon to fight against the climate change. So that is the reason why these both are interlinked, and there's a need to take them into, I mean, if you have to see them in connections and not in isolation. So if we talk about the sustainable development goal, because by 2030, the SDGs, the different 17 SDGs also have to be achieved. So the environmental degradation, which is threatening the achievement of the SDGs. So if we lose the biodiversity, then the achievement of the SDG will also be affected, whether it's the human well-being, whether it is the production and consumption, or whether it is natural resource based. So this all are dependent, interlinked with the biodiversity or the health of the environment. So the environmental degradation will really lead to our not able to achieve this sustainable development goals, which we are envisaging to have achieved by 2030. So that is another dimension of this. So the integration of biodiversity and climate change agenda is very important. Now we know that we have a united IPCC, which is the United Nations Framework Convention on Climate Change, has been there for so many years. In both this CBD and UNFCCC both emerged in 1992 in the Earth Summit, and after that, most of the emphasis was given on the climate change in the last 2 decades, but the biodiversity was not given that much of importance. And even the climate change agenda, which was the IPCC and UNFCCC, they were giving some
some kind of importance or coverage to the biodiversity in the form of like reducing emission from deforestation and forest degradation, which we call as REDD or REDD plus. And later on your REDD or REDD plus, which emerged in the Kyoto Protocol negotiation. And now there is an entirely different approach that we have to take the ecosystem approach of the CBD. And now we are talking about the nature-based solution concepts. So the nature-based solution which has emerged in 2006, and this has been given by the IUCN, International Union for Conservation of Nature. And this is a kind of action, this is a kind of approach which talks about that the action of the human should be that we have to go for protection of the ecosystem which we all have, which are now existing or which are there with us. We have to protect them immediately. We have to sustainably manage them, and even then, those which have been already degraded or destroyed, we have to restore them to their original status. So this is the kind of approach that we call as nature-based solution, which has become a new dimension of tackling the problem of environmental degradation, climate change, or biodiversity loss. So we have to integrate the global climate change and biodiversity science policy agenda. And what are the challenges? So we have this nature-based solution. The challenges are climate change, water security, human health, disaster risk reduction, and food security. So all these are the challenges which are lying before the humanity. And if we are just trying to address to all these challenges, then nature-based solution can help us. And in that, we have to integrate both climate change as well as the biodiversity. So climate change means reduction of greenhouse gases and maintenance or increase in the biodiversity. So the integration of these two dimensions in the nature-based solutions through the policy, science policy agenda has emerged as a very important tool in the recent years. So if you look at this picture, what it says is that the global goal for nature positive by 2030. So the time has come that we have to totally halt the destruction of our ecosystem. Now, the destruction of the ecosystem, we have to go, I mean, we can't afford to lose any of our existing ecosystem. And if we start from the zero net loss of nature from 2020, by 2030, we have to be net positive. I mean, we have to start restoring our degraded, damaged ecosystems, and we have to move towards the path of net positive by 2030. And by 2050, we have to aim for the full recovery of this damaged, degraded ecosystem. So this is a study which has come up in the very recently in 2021 by Locke et al. And he has given that the entire humanity has to enter into this global goal for nature or nature positive by 2030. Otherwise, there will be a lot of problem with the humanity, which is already we are facing right now. So this in the paper, Locke et al. Also talks about the nature positivity will require, how we will achieve this nature positivity is that we have to go for it. Entire change in our conceptual shift has to take place, and like we have to keep the environment at the top of this hierarchy. तो अगर हम इन्वायरमेंट को सबसे अगर हम ज़्यादा महत्व देंगे और उसके बाद हम सोसाइटी की बात करें, उसके बाद हम लास्ट में इकोनॉमी की बात करें, तो उसकी हमें अब ज़रूरत है. इससे पहले तक हम जो करते आ रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Idea was sharing among them, and we were giving the equal importance to all of these three aspects. So that will not play now. That cannot work now. So we have to have an entire different conceptual shift is required. और उसमें हमें सबसे पहले प्रकृति को रखना है, उसके बाद हमें समाज को रखना है, उसके बाद हमें इकोनॉमी को रखना है. So this is the approach which is required in the future time to come. And making a peace with the nature, that is the theme that we have to talk about. How to the transforming the nature, what we have been doing all these years, that we have transformed all our ecosystems, and that has put human well-being at risk. So transforming humankind's relationship with nature. So अब हमें अपनी जो relationship है nature के साथ, हमें उसको transform करने की जरूरत पड़ गई है. And if we do that, then that will help us in keeping the sustainable future.
तो जो आज तक हम करते आ रहे थे, हमने सोसाइटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट तीनों को हम वी वर गिविंग द इक्वल इम्पोर्टेंस और इक्वल वेटेज, बट नाउ वी हैव टू shift that concept, and we have to give more weightage to the environment, and then we know that if the environment is healthy, then naturally the society which will be able to thrive on that healthy environment, and the economy will also flourish. So this is the kind of approach which is required in next 20, 30 years, by 2050, if we are going for nature positive. So if you talk about, if you see this particular diagram, you can see that the interaction between climate change, people, and the nature. So we know that the climate change drives the nature loss. So that we have already seen that if we are losing the habitats because of climate change, as in Antarctic also we see that the melting of the glaciers, the melting of the glacier which is taking place because of the global warming, and that is causing the nature loss, and many of the species are, as the emperor penguin and other species, are going to be extinct very soon. So similar kind of situation, if you see that the climate change, so this is a kind of relationship which is shown in this figure, that how climate change is driving the nature loss, how the nature loss drives the climate change. So biodiversity loss is also creating the climate change, because if you don't have forest, if you don't have healthy ecosystem, then whatever carbon dioxide which is emitted is getting into the atmosphere, and that is also again increasing the temperature and leading to the climate change. Similarly, the human activities also are driving the climate change. So the people, they are cause of climate change, biodiversity loss. And but at the same time, people can also protect and restore the nature. So the question comes here is that although we have been, the human population have been the major causal factor for both the problems which the humanity is facing today, but the solution also lies with us. So we have to protect and restore the nature. And if we take this kind of approach, that we are putting the ecology at the top, and then trying to restore whatever we have lost already, and protect what is left, then maybe we will be able to restore the nature and keep the balance intact in next 20, 30 years. So keeping all this agenda into consideration, the latest we have seen that COP15 we just concluded last year in December, and that the entire the more focus was given on the nature, and that was इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पेरिस मूवमेंट फॉर नेचर, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड जो हुआ था यूएनएफसीसी का 2015 में, उसी तरह से इसको भी नाम दिया गया है पेरिस मूवमेंट फॉर नेचर. And this is also known as coming Montreal Biodiversity Summit. This is the UN Biodiversity Summit, which was the landmark deal to protect nature and direct billions of dollars toward biodiversity conservation. So the three main, there were four main goals of this COP15 summit, and 23 action-oriented targets have been fixed here. And some of the major targets are that we have to reduce threat to the biodiversity. We have to meeting the people's needs through sustainable use and benefit sharing, and tools and solution for implementation and mainstreaming. So like what are the tools, what are the technology for implementation and mainstreaming in different countries, the countries which are poor, the countries which are not developed, but they are having measure of the biodiversity, and how to give that technology and this funds, the resources to these countries, so that they can prevent and they can conserve their biodiversity. So the key target which have come out from this COP15 summit is that we have to conserve at least 30% of the terrestrial and 30% of the inland water and coastal marine areas needs to be conserved. Then we have to restore ecosystem. So one is that we have to conserve 30% of our terrestrial land as well as our coastal and marine water area, and see, at the same time, simultaneously, we also have to go for the restoration. The ecosystem which we have already damaged, that also has to be restored back to their original state or nearby original state. So that is another target which is given, which is an outcome of this COP15 summit which concluded last year. And reduce harmful subsidies, because the subsidies which are given in the form of fossil fuel subsidies or the pesticides, fertilizers, so those subsidies has to be reduced, so that the biodiversity, the threat which are to the biodiversity, can also be reduced to a certain extent. So these are some of the key targets of this COP15
which we also call as the Global Biodiversity Framework. So this Global Biodiversity Framework, which is now we have to achieve this by 2050. So it is a very challenging job, and the 30-30 commitment, as I already told you, that 30% of the world's land, coastal area, ocean, that needs to be protected. And currently the status is that we have only 17% of the land and 8% of the marine area under protection. So from 17 still to we have to reach up to 30%. So that is 13% more protected areas has to be identified across the globe. And similarly, if you talk about the marine protected area, then it is only 8%, hardly. So we have to have huge challenges there, that we have to bring about 22% of our oceans, coastal areas under the protected area network. And for India, the challenge is very huge, because the India is having only 5.28% of its area under the protected area category. And then again, we have a huge challenge of population. We have a developmental agenda also that we have to develop. So there's a lot of challenge which India has to overcome in the next 20 years by 2050, that how we are going to have this target of protecting our natural habitats. Similarly, restoration of 30% of terrestrial marine ecosystem. And then the funds are very important, and it has come out that we have to mobilize about $200 billion US per year, because that is very important. Until and unless you have fund, then entire debate of this biodiversity conservation becomes useless. So the funds have been there has been some agreement that we'll have about this much of funds has to be created, and that has to come from all the sources, whether international source, national source, private partnerships, NGOs at the individual level. So everybody has to contribute, and this much of fund is required per year if you want to conserve this biodiversity and restore 30% terrestrial and marine and oceans by 2030. Similarly, it has also been resolved that the developed countries, the countries which are rich and they have a lot of technology, they have to give funds to the developing nations. The developing nations which are very rich in their biodiversity, but they don't have that much of resources. So it has been pledged that about 30 billion US per year will be provided to the developing nations, the poor nations which are rich in biodiversity, and so that they can use that fund for protection work or the conservation work in their countries. So this, if you talk about this 2021 to 2030 is also the decade for ecological restoration. So if we have to go nature positive, as we were discussing, that if you want to have this nature positive by 2050, then the ecological restoration, the decade becomes very, very important. So this decade, which talks about how to restore the degraded land, so India also has a huge target, and India has pledged that we will be restoring about 26 million hectares of the land by 2030. So that is there at the country level, and at the global level, there is about 326 million hectares of the land which has to be restored. So this 10 years to restore our planet and this entire decade of ecosystem restoration is very crucial for us. And this decade is also crucial because by 2030, we also have to have the challenge to meet all the sustainable development goals. So the global movement is required. A global movement, the entire ecosystem restoration has to become a global movement where every person has to play an equal role, and we have to see how we have to reverse the degradation, and repair action has to come into focus now. Then we require leaderships, the leadership from the country level, the leadership at the political level, the leadership at the individual level, at the societal level, that is also required, because until and unless we have leadership from different areas, then the entire movement of this ecosystem restoration will not be successful. Then we have to have build the capacity, we have to shift the behavior, we have to move from the degradation towards the restoration. So all these years we have been just degrading our environment. Now we have to start thinking of restoring the environment. So whatever little efforts we can put, we have to do that in the restoration processes. We can contribute in kind, in cash. So whatever possible, everybody has to now play an equal and important role, because the problem is very wide and everybody is equally going to be affected by that.
So the next generation, a lot of education is required, youth advocacy is required, and the entire youth has to become very effective. They have to become the change agent of change in this entire eco restoration program. And then we also have to increase the technical capacity of our, the human resource, because we do have some know-how, but that know-how has to go at the community level, at the ground level, at the panchayat level. अगर हम रिस्टोरेशन की बात करें कि किस तरह से हमारे जो इकोसिस्टम है उसको हमें रिस्टोर करना है, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग एट ग्राम panchayat level has to come up. So this is a huge restoration movement, has a lot of scope in the future, and if it is implemented properly, maybe we will be able to achieve this target which every country is trying to achieve, and they have focus. So some positive signs, if we talk about, like from India, we have seen that that we have become successful at least in saving our tiger. The tiger population is on rise, and if अगर हम बात करें कि आज से 10 साल पहले, एक डिकेड पहले, जब हमारी जो एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन थी वो 3200 के आसपास रह गई थी, और उसके बाद 2015 में से there has been a very sharp increase in the tiger population. 40% has increased, and now we have about 5,500 individuals worldwide in the wild. And the India's tiger numbers also has increased from 3,200 in 2015 to 4,500 in 2022. Despite so many extreme threats we are facing in our country, but this is a positive sign that the conservation efforts which the country is taking is really paying off. Similarly, the another important story which we have been listening, and that has been in news in the recent time, is the cheetah reintroduction in India. So the Prime Minister, our Honorable Prime Minister Narendra Modi, is very enthusiastic that how this cheetah, which used to be there in India, got extinct in 1952 because of the hunting, illegal poaching, and all that. So now there are efforts that we have to reintroduce the cheetah in our national parks, and we have already brought some a lot of planning, like 8 cheetahs have come up from the Namibia recently, and they have been introduced in the Kuno National Park, and there are efforts that they will be now released into the other national park in MP, Rajasthan, and all that nearby areas. The Cheetah Introduction Action Plan also includes introducing 50 additional cheetah to the country in the coming years. So abhi though we have brought only 8, but there are plans that we will be introducing 50 more in the coming time. So this is another important nature conservation or biodiversity conservation program which India is looking ahead in times to come. So India can guide the planet. जैसे हम बात करते हैं कि भारतवर्ष में प्रकृति के साथ जो close connection है, that is there from the time immemorial, and we have been the worshipper of the nature. And so a lot of people look at India, that how India can be the champion of biodiversity conservation, and if we can do that biodiversity conservation, how the problem of climate change can also be simultaneously tackled. So there are some positive signs again from the Indian government front. If we talk about the Union Budget 2023, that has mentioned green growth as one of the 7 priorities of Saptarishis. So there's a lot of focus on the green growth, the nature positive recovery path, which we were just discussing about. So the green growth, whether it is we have to go from the businesses, all kind of finances, so that has to now shift their focus from the gray kind of growth which we were seeing towards the green growth. And there's a lot of scope. The hydrogen, green hydrogen initiative which India has taken, the solar alliance which India has taken up. So these are some of the very positive signs that India is really moving in the right direction. The National Mission for Green India, this was the National Action Plan on Climate Change. We know that India's National Action Plan on Climate Change was introduced in 2008. And then we have about 8 national action plans in that. And the Green India, National Mission for Green India is another very important mission under this National Action Plan on Climate Change, जिसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारा जो forest cover है, how to increase that forest cover on the degraded land and protect the existing forest land. So there's a lot of scope of making this National Mission for Green India, GIM, a very successful stories. Then we have a green credit program which has the objective to incentivize environmentally sustainable and responsive action by companies,
individual and local bodies. So this is another green credit program which has been launched. So that will help in achieving the green growth in a better way. Then we have a mangrove initiative for shoreline habitat and tangible incomes. This is another important initiative. We know that mangrove, they are very important ecosystem, as we know that during the when we had this tsunami, and during the tsunami, this mangroves, wherever the coastal area where the mangrove was there, those areas were not affected. They were the threat to the human, the life, the loss of life and property in those area जहाँ पे इसकी मैंग्रोव ज़्यादा थे, वहाँ पे बहुत कम इसकी संभावना हो पाई थी. तो जो मैंग्रोव है बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम है, जो बहुत ही unique kind of ecosystem we have in our country. And Sundarban, we talk about Sundarban where we have this बंगाल टाइगर, जो उसका हैबिटेट है बंगाल टाइगर का सुंदरबन. तो वो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है जो Government of India has taken up. Then we have the Prime Minister Program for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth. तो जो हम बात कर रहे हैं आजकल, जो हमारी प्राकृतिक खेती के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो सॉइल है that is getting affected due to this fertilizers, chemical pesticides. So the परंपरागत खेती की जो बात प्राइम मिनिस्टर द्वारा की गई है, वो भी एक इस तरह का एक इनिशिएटिव है कि हमें अपनी सॉइल की बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि सॉइल सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर हम सॉइल की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तो वही सॉइल की बायोडाइवर्सिटी आपके वेजिटेशन को उसको इम्पैक्ट करती है, और जब वेजिटेशन अच्छी होगी तो जो उसमें जीव जंतु उसमें फ्लरिश करते हैं वो भी उतने ही हेल्दी होंगे. तो सॉइल बायोडाइवर्सिटी, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सारी चीज़ें जो आई हैं इसमें अभी हमारे देश की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में. फिर वी हैव द अमृत धरोहर स्कीम्स. द अमृत धरोहर जो हमारे वेटलैंड्स हैं, जो हमारी नदियां हैं, उसको जानने की, उसको पहचानने की, और उसको किस तरह से हमें प्रिजर्व करके रखना है, कंजर्व करके रखना है. अपने आसपास के जो तालाब हैं, जो और भी वेटलैंड्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जो जीवन में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को कम करने में उनकी संभावना हो या बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण में. तो उस अमृत धरोहर स्कीम भी एक बहुत बड़ी भारत सरकार के द्वारा जो लॉन्च की गई स्कीम है, जो that can guide the India to become a champion of biodiversity conservation and climate change protection. Then the National Mission on Biodiversity and Well-being, जैसे हमारा National Mission on Himalayan ecosystem है, उसी तरह से National Mission on Biodiversity and Well-being has also been drafted, and that is now it may be implemented very soon. और उसमें भी ये कहा गया है कि किस तरह से हमें अपने ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को बचाना है. और National Mission Biodiversity में how the expertise of different stakeholders, the different scientists working across the different areas will be integrated, and then we will have this Biodiversity National Mission and Well-being, जो कि बात करेगी कि किस तरह से हमारी जो जैव विविधता है उसको बचाना है, और जो हमारा ह्यूमन वेलबींग है उसको उस जैव विविधता के द्वारा उसका लाभ हम पहुंचा सके. So with this, yes, I would like to end my talk by this particular slide. And इस slide में हम देख सकते हैं पद्म भूषण लेट सुंदरलाल बहुगुणा जी को, who was the champion of environment conservation or protection. He was the crusader for environment movement, we can say that. And I'm fortunate that I have got the opportunity to see him with a very close, because जहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ टेहरी गढ़वाल में, जो मेरा गांव है सेंदुल, वो इनके सुंदरलाल बहुगुणा जी के जो आश्रम था सिलियारा, उसके बहुत ही करीब है, जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पे है. तो बचपन में भी हम बहुत उनके आश्रम में जाते थे और बहुत उनसे इंटरेक्ट करते थे. और जब हम लोग गुवाहाटी में थे, माय फादर वाज देयर, तो उस समय भी सुंदरलाल बहुगुणा जी 1980s में उन्होंने पूरे हिमालय की यात्रा की थी, और वो उत्तराखंड से पूरे नॉर्थ ईस्ट तक वो पैदल यात्रा में आए थे. तो उनसे उस समय मिलने का मौका मिला. और जब मैं दून विश्वविद्यालय में भी जब हम आ गए तो हमें कई बार हमने उन्हें बुलाया भी था अपने कैंपस में, और कुछ पेड़ों का भी हमने उनसे अपने बायोडाइवर्सिटी को कैंपस के रिच करने के लिए हमने उनसे कई पौधे भी लगवाए थे. तो what he said was that what was his slogan for this entire planet Earth is that ecology is permanent economy. तो उन्होंने कहा कि जो प्रकृति का संरक्षण है वही हमारी एक जो इकोनॉमी की हम बात करते हैं, अगर हमारे पास प्रकृति ही नहीं होगी तो हम इकोनॉमी के बारे में हम उसकी चर्चा कभी कर ही नहीं पाएंगे. तो जो भी इकोनॉमी हमारे पास है वो कहाँ से आ रही है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से आ रही है.
तो जो ecology है, that is our permanent economy and we have to preserve that. So this great idea was given by him way back in 1970s. So we can see that the same concept is now being taken up into like whether it is UNFCCC, whether it is CBD. तो आज जो बातें हो रही हैं, जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है, इसकी बातें हम अब कर रहे हैं, तो वो सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा 1970-80s में ही कह दिया गया था. So he was, I mean, the role model for each one of us. So with this slide, which is dedicated to Shri Dev Sundarlal Bhoguna ji, the Padma Bhushan, and so I would like to end my talk. So if you have any questions, we can have some discussions also. So that is, thank you so much for your patience. Madam, for your such a lucid, well-researched presentation. You have given very good insight how we are disturbing our ecosystem and how the disturbance of the ecosystem has affected our biodiversity and responsible for the climate change. So you have also pointed out the challenges we are facing both at micro and macro level. You have also talked about the solutions, how we can arrest this deterioration of our ecosystems. And the most important thing which I got from your presentation is that every individual is to be nature positive. So, and you have also talked about the priority to be given in any development plan. Nature is to be given the first priority, the second society, and then the growth. So all these things combined together have given a holistic dimensions to the problem which we are facing right now with regard to the ecology and the environment. So thank you, madam. Thank you a lot. I request our participants here to make any kind of comment, observations, and if you have any kind of questions, you can raise your hands and interact with our resource persons. The first one I have seen who have raised his hand is Dr. Tilak Ram Prajapati. So I would like Dr. Tilak Ram Prajapati to kindly come forward and give your observations, and if you have a question, you can ask your question. Dr. Tilak Ram Prajapati, please. Dr. Tilak Ram Prajapati. Yes, good afternoon, sir. Very good afternoon. Sir, actually, it was by mistake. I have no question, but it was very elaborated and informative session by the madam, and I appreciate it in future too. Thank you, thank you, thank you. Anyone else? Dr. N.R. Prasad is there. Yeah, good afternoon to each and everyone. It was very nice and very informative presentation by full of knowledge and mind-blowing presentation, madam. So nice of you, madam. So nice of you. Thanks a lot. There is no word to, I mean, praise you. Okay. I have no word. Okay. Thanks a lot. Thanks a lot for such a nice presentation. Thanks, madam. Thank you so much. Hopefully, I was able to explain what are the connections between the human biodiversity and climate change, and what each one of us has to do in future to protect our own sustenance. So that is very important. And we all are going to be the actors of change in the times to come. So yes, and I would love to have you all, the people from the regional center, to visit our university. So we do have a very good School of Environment and Natural Resources here, and we are having 3 master's program. Like we have a master's in Environment Science, master in Natural Resource Management, and MTech in Environmental Technology. उसके अलावा हमारे पास we also have research program, PhD program in environmental science, and we do have a very good facility. The laboratory facility is very good, and very good faculty also from different parts of the world. So I welcome if any one of you all are welcome to visit us. हमारे साथ हमारे
इस रीजनल सेंटर पे पहले भी काम कर चुके हैं डॉक्टर NR प्रसाद जी, जो सहायक क्षेत्रीय निदेशक आज के डेट में पुणे हैं। वह भी मैडम आप ही के क्षेत्र से जो है, फील्ड ऑफ स्टडी से जुड़े हुए हैं। सो वह भी मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ हम बात करना चाहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, प्लीज। Good evening to all. Thanks for giving me the opportunity to speak. एक मीटिंग में हम बाद में बात करते हैं। Yeah, today it was my pleasure to listen to an expert talk from Madam on biodiversity and climate change. It's a very hot topic. It's been a hot topic since 1800. I mean, since Industrial Revolution started off, from where we started talking about the climate change and dwindling of or effect on the biodiversity. It was an elaborate and thorough knowledge that Madam gave to us on this topic. Over here, we all talk about this, effect on this biodiversity. At the same time, some school of thoughts or the scientists or the scholars who say that because of the climate change, some biodiversity will be supported in the ecosystem and they will be thriving well when compared to the other species which have all gone into the endangered species. For example, if you take some rice species, earlier our own rice species, indigenous rice species were taking around, say, 3 months to complete their life cycle to have a matured seed. Now, because of the hybrid and because of the climate change, they say that within 1.5 month or 2 months, you are able to get the crop with good yield. That is the thought from some of the school of scholars. On this, there are many such more examples where scholars are talking about where the biodiversity will be increasing in future. For this, ma'am, do you support such research or talks or studies? Yes, to a certain extent, because the area which are at the high altitude, or because there's a warming, so they will be becoming more warmer and they can support some of the life. So that is going to happen. For example, like there's a research which has come out that if the Antarctic, this emperor penguin is going to become extinct, but there are other species of penguin which may flourish. There are some plant species which may flourish because of that warming. But maybe that is happening in the small time scale, but what will happen in the future, we don't know. And similarly, like if we see about this biodiversity which is getting lost from the equator, so they may have a chance to migrate towards the poles, because poles are going to become warmer. So जो equator से जो biodiversity, that may shift towards the poles, but the biodiversity which is there at the poles, so it has no chance. So that there's a problem for them. So yes, certainly there are certain areas where the temperature will become more suitable for the plants to grow. So naturally there will be some areas which will have more biodiversity, but the area which are threatened, especially the polar region and the mountain tops, so there the problem will be more. So that is my take on that. One more doubt, since it's my favorite subject, so it's bothering me. It has always bothered me, and it provokes me to ask more doubts, like with experts like you. What I feel is that where there is when there is a metabolic growth, increase in the metabolic growth because of the climate change or the global warming, because of the increasing metabolic activity, do you feel that the life cycle will get completed sooner, and we maybe including human beings, our lifespan is going to shorten? We're going to grow fast and die fast, something like that. I don't see that, but I'm seeing that the human lifespan might increase, the kind of development the medical science is doing. So people are talking about aging. They won't be, anti-aging, and people might live up to 130 years. So that is what we are saying. So I don't support from my point of view that the human will be dying soon. Maybe we'll be living longer. What is expected in future? I don't know. That happens or what happens, we have to see that. But of course, that solution has to come from the science only. So science and technology
has to come out with the solution. So whatever the problem which we are facing, so if we have a sound scientific knowledge and the entire world, if they work together, and now people are talking about one world, one family, so all these concepts are coming up, and the rich countries have also realized that losing the biodiversity, now the kind of threat these rich countries are facing nowadays, so they have to also now talk about this kind of problems, the challenges. So all these years, yes, they were they were shying away from there, but now they have also realized that if they have to do, they have to protect the environment, they have to protect the planet Earth, so they also have to contribute. So that is a positive sign, I must say. Thank you, ma'am. और कहीं कोई ऑब्जर्वेशन, कमेंट, क्वेरीज? मुझे लगता है मैडम ने इतना सुंदर प्रेजेंटेशन किया है कि नथिंग हैज बीन लेफ्ट डाउटफुल। सो मुझे लगता है कि अब हम अपने इस मीटिंग को जो है, इस संभाषण की प्रक्रिया को जो है, हम विराम देने की ओर मुड़े। और मैं निवेदन करूंगा, डॉक्टर डिमरी, यू हैव टू से समथिंग। थैंक यू वेरी मच। मैडम ने वैसे ही बहुत सारे इश्यूज को कवर किया है और वी थॉरली एंजॉयड इट, एंड होपफुली इन फ्यूचर आल्सो वी विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम हर lecture. And in fact, you know, we also have MSc in environmental science, and we want to have some sort of association with the Doon University, so that our students are also benefited from your experience. And we will be visiting you, and definitely, in case it can be done, it will benefit the students also. Thank you. Thank you, Dr. Dimri. तो लास्टली आई रिक्वेस्ट डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद, हमारे जगदम्बा प्रसाद जी भी संयोग से जो है आपके क्षेत्र से जो है बिलोंग करते हैं, और इन्होंने JNU से PhD करी है। और मैं तो ये सोचूंगा कि JNU वाले जो बोलना शुरू करते हैं तो चुप नहीं होते, लेकिन विषय वस्तु पे जो है कम ही आप बोलें, और औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद, प्लीज। थैंक यू सर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 के अवसर पर इग्नू क्षेत्रीय केंद्र देहरादून द्वारा आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का मैं धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आज की वेबिनार के मुख्य वक्ता एवं दून विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कुसुम अरुणाचलम जी का, जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी एवं क्लाइमेट चेंज जैसे विषय पर एक सारगर्भित व्याख्यान दिया। निश्चय ही उनके व्याख्यान से हम सभी लोग, खासतौर पे हमारे शिक्षार्थी जो इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, खासतौर पे एनवायरमेंटल साइंस के विद्यार्थी इस प्रोग्राम में काफी संख्या में जुड़े हैं, और भी तमाम प्रोग्राम्स के शिक्षार्थी जुड़े हैं, वो इससे लाभान्वित हुए होंगे। जैसे सबने बताया कि मेरा भी विषय है, मेरा विषय मैडम सॉइल बायोडाइवर्सिटी पे रहा है। तो जब आपका संभाषण चल रहा था तो इट वाज रिमाइंडिंग मी माय डेज ऑफ रिसर्च, सो इट वाज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस टू लिसन टू यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो इस महत्वपूर्ण व्याख्यान हेतु अपना बहुमूल्य समय देने हेतु मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आभार। इसी क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इग्नू मुख्यालय एवं विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों से इस वेबिनार में प्रतिभाग करने वाले सभी फैकल्टी मेंबर्स एवं एकेडमिक्स का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। एंड खासतौर पे मैं अपने साथी डॉक्टर NR प्रसाद जी का इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए और सक्रिय अपना इनपुट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी क्रम में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र देहरादून के विभिन्न अध्ययन केंद्रों से आमंत्रित एवं प्रतिभाग करने वाले समन्वयक एंड एकेडमिक काउंसलर, जिन्होंने इस मीटिंग के लिए, इस वेबिनार के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे कि मैंने मीटिंग में देखा, डॉक्टर अनिमा शर्मा, डॉक्टर उषा पाठक मैम, डॉक्टर मादुद्दीन, डॉक्टर रमेश चंद्र जी, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर अखिल चमोली, डॉक्टर महिदर तिवारी, डॉक्टर रमा मैखुरी, डॉक्टर प्रजापति, डॉक्टर भास्कर चौधरी, ममता असवाल एंड डॉक्टर संगीता खुल्लर, ये सभी आप लोग इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम का शोभा आपने बढ़ाई, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी शिक्षार्थियों जिन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स जब होते हैं तो उसका प्रमुख फोकस शिक्षार्थी होता है, क्योंकि ये सारी बातें जो मैडम ने बताई कि सिचुएशन अलार्मिंग हो गई है और फ्यूचर में हमें बहुत कुछ करना है,
नेचर की ओर जाना है, तो सारी चीजें हमारी नई पीढ़ी के लिए है। तो शिक्षार्थी इस कार्यक्रम में आते हैं तो बड़ी हमें खुशी होती है। तो आप और निश्चय ही इस व्याख्यान से आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और प्रकृति के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति आपकी जागरूकता में भी वृद्धि हुई होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। और अंत में मैं अपने सीनियर एवं इस क्षेत्रीय केंद्र के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार डिमरी जी, जिनके की नेतृत्व में, जिनके दिशा निर्देशन में इस कार्यक्रम का संचालन हुआ है, एवं हमारे जो सीनियर हैं उपनिदेशक डॉक्टर रंजन कुमार जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक सुंदर संचालन किया है, उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। एवं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र देहरादून के सभी हमारे कर्मचारी गणों का, साथियों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसमें प्रतिभाग किया। उन्हें आप सभी का इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और अपना योगदान देने के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अंत में मैं डॉक्टर डिमरी क्षेत्रीय निदेशक के आदेश से और प्रोफेसर सीवी रमन जी को जो है नमन करते हुए इस कार्यक्रम के विराम की मैं घोषणा करता हूँ। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।